welcome to Vyaspeed. In last lecture, I explained you the construction of index number of one commodity. Now, in this lecture, I am going to explain you about the construction of index number of more than one commodity. Now, for the calculation of construction of index number of more than one commodity, following two methods are used. In last lecture, I already explained you that there are two methods for the construction of index number in when there are two or more than one commodities, that is simple aggregative method and simple average of price relative method. अब डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। क्योंकि अब इस बार क्या होगा, जब भी एक से ज्यादा कमोडिटी होगी तो आपको ईयर दिए हुए होंगे और कमोडिटीज गिवन होगी, ए बी सी डी ई, राइस, मूंग, अरहर दाल, उड़द, शुगर, सॉल्ट। अब इन सब के बेस पे अपन को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम सिग्मा P1 और सिग्मा P0, P1 मींस करंट ईयर प्राइस, P0 मींस बेस ईयर प्राइस, इसके आगे वर्ड लगा है सिग्मा, मतलब समेशन, मतलब उसकी टोटल करनी है। तो P1 की टोटल कर लेंगे, करंट ईयर प्राइस की टोटल कर लेंगे, P1 करंट ईयर प्राइस, P0 की टोटल कर देंगे बेस ईयर प्राइस इंटू 100, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। और जब एक से ज्यादा कमोडिटी होती है और सिंपल एवरेज मेथड यूज लेना होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट R. R means price relative and it is calculated by the same formula P1 upon P0 into 100. P1 means R means price relative, P1 means current year price, P0 means base year price। और जब हम R कैलकुलेट कर लेते हैं, then we use this formula P01 equals to sigma R upon N. Sigma R means aggregate of price relative, P01 means index number and N means number of items, कितनी commodities हैं, number of commodities। Now let us see this with an example. From the following data, compute price indices for 16, 17, 18 and 2019, taking 2015 as the base year। 2015 को बेस ईयर मानते हुए आपको इन दोनों मेथड से, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंडेक्स नंबर। और ये क्वेश्चन है हमारा ABC 2015, 16, 17, 18, 19 और ये हमें प्राइसेस गिवन है। सॉल्व दिस एग्जांपल। नाउ कमोडिटी है ABC, तो अब हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं P1 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ऐसा कि आपको पता है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। तो अब हम इनकी टोटल कर लेते हैं, सिग्मा ये P0 हो गया, ये सिग्मा P1 इसकी टोटल कर ली, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया और ये इसकी टोटल P4 हो गई। 2, 3, 4 इसलिए दिया है क्योंकि एक से ज्यादा नंबर है। P2 का भी मतलब करंट ईयर प्राइस, P3 का मतलब भी करंट ईयर प्राइस और P4 का भी मतलब करंट ईयर प्राइस होगा। जब हमें 2016 का, क्योंकि 2015 तो बेस ईयर है तो उसका इंडेक्स नंबर तो 100 ही होगा, लेकिन जब 2016 की कैलकुलेशन करनी होगी इंडेक्स नंबर की, तो सिग्मा P1 हमारा करंट ईयर प्राइस। जब 2017 की करनी होगी इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन, तो सिग्मा P2 इज अवर करंट ईयर प्राइस। 2018 की जब कैलकुलेट करना होगा इंडेक्स नंबर, सिग्मा P3 एंड सेम सिग्मा P4 फॉर 2019 इज अवर करंट ईयर price and the base year price is 20, which is fixed. Now we calculate index number of for 2016. Now 30 is the current year price and base year price is 20. So P01 equals to 30 divided by 20 into 100 is equals to 150. Now we have to calculate index number of 2017. So for the calculation of 2017 index number, we need price 33, total current year price, base year price is fixed 20, 33 divided by 20 into 100 is 165. Now for the calculation of index number for 2017 is current year price 35 and base year price is fixed 20, so 35 divided by 20 into 100. And for the calculation of index number for 2019, current year price is 40 and base year price is 20, so 40 divided by 20 into 100 is the index number. So in this way we calculate and construct index number of more than one commodity with the help of simple aggregative method.
Now, second method is simple average of price relative method. In this, first of all, we have to calculate R. R is P1 upon P0 into 100, and then we use formula sigma R upon N. So how we calculate R? As you know, 2015 is the base year, so its index number is 100. So there R means price relative is also 100. Now for the calculation of this R for 2016 price commodity A, so 3 divided by 2 into 100. Same for the 2017, 5 is the current year price. R is calculated with the formula P1 upon P0 into 100. So for 2017, 5 is the price, current year price, and 2 is the base year price. So 5 divided by 2 into 100. Same for the 2018, 5 is the current year price, 2 is the base year price. And for 19, 6 is the current year price and 2 is the base year price. 6 divided by 2 into 100 equals to 300. So these are the R calculated for the commodity A with respect to years 16, 17, 2018 and 2019. Now we come to commodity B. 2015 is the base year, therefore R of 2015 for B is 100. For 16, current year price is 10, base year price is 8. So 10 divided by 8 into 100, 125. For 17, 12 is the base year price, current year price, and 8 is the base year price. So 12 divided by 8 into 100. For 2018, again 12 is the current year price, 8 is the base year price. 12 divided by 8 into 100, 150. Again for 2019, 10 is the base current year price and 8 is the base year price. 10 divided by 8 into 100. Now for C commodity, R for 2015 is 100 because it is the base year price. For 2016, 17 is the current year price, 10 is the base year price. 17 divided by 10 into 100. For 2017, 16 is the current year price and 10 is the base year price. 16 divided by 10 into 100. 18 is the current year price, 10 is the base year price, 18 divided by 10 into 100. And in same way, 24 is the current year price for 2019 and 10 is the base year price. So 24 upon 10 into 100. Now for the calculation of index number we need sigma R. R तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, R की टोटल चाहिए. तो हम R की क्या करेंगे, टोटल करेंगे 300. और जब हम R 2016 का 150, 125 और 170 को ऐड करेंगे तो 445 आएगा. सेम 250, 150 और 160 करेंगे तो 335 आएगा. यहाँ ये गलत लिखा है, 250, 150 और 160, इट इज 560. ये 560 होगा. देन वी यूज 250 प्लस 150 एंड 180, it is 580. And then 300, 125 and 240. 300 plus 125 plus 240, it is 665. Now we calculate sigma R. Now sigma R is calculated 3 upon 3 into 100, तो 100 ही होगा. sigma R 445 divided by 3 into 100. अब यहाँ पर भी ये गलत होगा, इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं. Sorry, here is a mistake in the totaling of R. So its totaling is 560. So 560 is divided by 3, that is equals to 186.67. For next, it is 580. Sigma R is 580 divided by 3, 193.33. And for this 665 divided by 3 equals to 22.1.67. In this way we calculate the R and price relative and index number when with the help of simple average of price relative method. Thank you so much. For any doubt you can WhatsApp me in this number. Thank you so much.